Rites is not a Christian group. Its leader advocates spiritual practice. He's also Assistant Mr. Zappa Hussain, who will translate for us. Good morning, you both, gentlemen. Good morning. Good morning. Now, first of all, can I ask you, Mr. Shahi, through Mr. Hussain, what were the circumstances in which you say you met Jesus? पहले सवाल ये है कि कैसे हालात में आपने ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की अमेरिका में? तो ये है कि हम अमेरिका आए तो एक होटल में रात सो रहे थे. I was in New Mexico and I was in a hotel during the night. वो सोने वाला था, इतने में शख्स कमरे में आया और मैंने समझा मेरे को अपना साथी है. And just before I was going to sleep, some person came into my room and I just thought that it was one of my staff. मैंने उससे पूछा कौन है, इसका मेरा आपकी मुलाकात करने की है. I asked, who are you? And the person said, I have come to see you. तो जब मैंने लाइट ऑन करी, आंखें खोली, तो सामने एक खूबसूरत नौजवान गया था. And then I turned the light on and saw that there was a handsome young man standing before me. उनके से पहले मेरे तजुर्बात थे, जब कुछ शैतानी चीज़ें आती थी तो मुझे घुटन होती थी, वह ब्राह्मणी चीज़ें आती थी, मेरे अंदर से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ कही बात. Through my spiritual experience in the past, I understood that if it was something from Satan or something false, then I would feel afraid, and was because I felt great happiness inside my body, and through other spiritual means, I was able to see that it was something of a great spiritual experience. So this wasn't, in fact, a physical body that you saw, Mr. Shahi. I mean, the waiter or anybody like that coming in? ये रूहानी मुलाकात की जिसमें नहीं, मुझे जिस्मानी लगती है. this was a physical meeting with Jesus. इन लोग मैंने आंखें खोली ना, दूसरी बात की तो है ना, वो मुझे जिस्मानी लग रही तो सामने जिस्म प्लस हमें. So when I opened my eyes, I saw this handsome young man, and I spoke to him, and he spoke to me. How do you know it, Jesus? आपको ये कैसे पता चला कि वो इस तरह का? वो कैसे पता चला है कि ये मुझे मालूम होगा कि ये बंदा गुरुवानी है. I felt intense energy, and I at the same time felt that it was an immense spiritual personality that was standing before me. मैंने पूछा, उन्होंने बताया तो मैं ईसा इब्न मरियम. I asked him, and he said, I am Jesus, son of Mary. तो उन्होंने मैंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, उनका पहले भी कुछ ठिकाना था, अभी कुछ ठिकाना नहीं है. I asked him where he lived, and he said, I had no home in the past, and I have no home now. फिर उन्होंने मुझे कुछ बताया कि मैं काफ़ी अर्सा से हूँ और जिस तरह तुम लोगों को अल्लाह की मोहब्बत कर रहे हो, उसी तरह मैं लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. And he said to me that I've been here for a long time, and just as you are preparing people for the love of God and cleansing them and purifying them, in a similar way, I am doing this work also. मैंने पूछा कि आप अपने फादरों के पास भी जाते हो, मुझे पता है. उन्होंने बोला कि नहीं, जो हमारे फादर हैं उनमें रूहानियत नहीं है, वो करने से मैं रूहानियत है. I asked him whether you also appear before priests and fathers in the Christian faith, and he's replied that I do not do that because they lack spirituality and spiritual power, therefore they are unable to see me or communicate with me. कुछ लोग ऐसे हैं एक किस्से में जिन्होंने कुछ रूहानियत सीख के हमारे उनसे कलेक्ट. And he said that there are some people among the Christians who have learned spirituality, who have become enlightened and purified, and I do communicate with them and have some contact with them. और हम लोगों को तसरन बोलते हैं, उसके जरिए हमारा देना काम कर रहा, थाईलैंड से श्रीलंका वगैरह. And he also said that there are such people amongst the Christians whom I have given some of the spiritual power to. Therefore, they are able to carry out my work in Sri Lanka and in Thailand. वही लोग फिर मेरे में शामिल करेंगे, उस वक्त लोग मेरे ऐसे. And such people will actually testify and bear witness that I am Jesus, and therefore people will then accept that I am Jesus when I appear. Mr. Shahi, you're speaking for an imperfect as a man. What language was Jesus speaking? ये पूछ रहे कि आप तर्जुमान से गुफ्तगू कर रहे, इस तरह कौन सी ज़बान की आप से गुफ्तगू? मुझसे उर्दू ही में कही, मैंने उनसे पूछा, उनका मैं घर ज़बान ठीक कह रहा. Jesus spoke to me in Urdu, and I asked him, and he said that I can speak all languages. Why did he choose you then to appear to you, Mr. Shahi, and what was his message to you? ईसा अलैहिस्सलाम ने आपको क्यों चुना, आपसे मुलाकात क्यों की, और उनका पैगाम क्या था आपकी तरफ? इनका पैगाम वही था, जिस तरह तुम मोहब्बत का काम मिशन है, इसी तरह मेरा भी मिशन है, और एक दिन इकट्ठे होकर ये काम करना है. He said to me that I do similar work just as you are doing, teaching people about spiritual knowledge, spirituality, and teaching them about inner enlightenment and purification. And one day will come when we will both work together. Your posters say that you're going to deliver an unprecedented address
broadcast to the world after Pope made a global radio broadcast in October or November. I didn't know the Pope was making a global radio broadcast. ये कह रहे कि आपके स्टार ने ये लिखा हुआ कि आप इस साल के आखिर में एक आलमी खिताब फरमाएंगे जो पोप के खिताब के बाद होगा. तो ये पूछ रहे इसी के मतलब को और ये कह रहे मुझे पता नहीं था पोप भी इस साल को खिताब करेगा. पोप को भी पता है पहले इसको. It will be regarding the second coming of Jesus, and the Pope does know regarding the second coming of Jesus. And the Pope will make this broadcast in October, you think? पोप जो है वो साल में अक्टूबर में खिताब करेंगे. जब भी वो करेगा तो उसका खिताब अपने कसम कीजिएगा. उसके बाद हम खिताब करेगा तो अपना मुसलमानों की. I mean, the Pope is scheduled to speak to the world in October, but whenever he does speak, he will address the Christians. After the Pope has addressed the Christians, I will then address the Muslims, and it will be regarding the same subject. How do many of your followers, I believe, are Muslim by birth, but how are you accepted by non-believers who are Muslims and follow the Muslim religion? आपके बहुत से मानने वाले जो हैं वो कहते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो आपके कैसे पाते हैं और कैसे इस सलाम को पाते हैं. उसको हम उनके दिल की धड़कनों को जब अल्लाह सिखाते हैं अल्लाह तो हम फिर बली करते हैं. We teach them about the knowledge of spirituality. When their heart beat through our teachings are converted into reciting the name Allah, the name of God, then they follow us, and when they see the physical and the spiritual truth, when they experience something. But some don't follow because somebody firebombed your church. ये कह रहे हैं ये भी सही है, तो then कुछ लोग आपको नहीं मानते क्योंकि उन्होंने आपका ट्रैक्टर बम फेंका आपकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया. ये देश का क्या ना ये तो हर मुसलमान पियानिस्ट तो मान को खुद मान. There are true powers, there are the truth and the falsehood. Some believe and some not believe. You have a photograph of Caesar. Is that the one I've seen on poster? You know, तस्वीर है पोस्टर के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम की. वो बड़ी सारे स्थान के और फिर और बात कर लो. फिर उसके बाद जब मैं ट्यूशन में गया ना तो वहाँ एक औरत के पास Because that will be to image of Jesus. And when I left house, I went to Tucson in Arizona, and I saw a lady there, and she had a photograph. फिर मैं उस तस्वीर को पहचान लिया कि ये तो वही शख्स है जो मैंने फोटो में लिखा. But I recognized that photograph of being the same person that I met in the hotel that night. जहाँ के ऊपर खुद कह रहे हैं इसके जीसस का भी है उससे वो तस्वीरें मिलती. And there are some images presently on the moon, and that photograph actually matches one of the images on the moon and which belongs to Gabriel. How do you mean image on the moon? क्या मतलब आपको दुकान पर तस्वीर है? कहते हैं वो हम दिखा के हमारे पास है लोग उनको दिखाएं. Yes, there are images on the moon, and we show people, look at the image on the moon, look at the photographs of the moon, and this particular image that we refer to is the image of Jesus, which matches the photograph. Might this not just be a sophisticated hoax? Mr. Shahi, you may in fact have been hoaxed when you were in New Mexico. क्या ये सब झूठ नहीं हो सकता, धोखा हो सकता कि मेक्सिको के अंदर आपको ये धोखा हुआ कि सलाम को बर्बाद चाहिए, और कान का भी धोखा हो सकता है. चलो मुझे था धोखा अपनी रूहानी उसमें नहीं हो सकता और चांद के ऊपर भी धोखा नहीं हो सकता क्योंकि फकीर ने देखी और वो मिलती मिलती हमने वही देखी कभी धोखा. This cannot be for this cannot be a hoax in light of my spiritual experience and power, and in light of what is on the moon, and particularly in light of this photograph that was possessed by an independent party, almost matched the image of the person that I met that night. Where did the independent party get their photograph from? ये जो तस्वीर उस औरत के पास थी, उन्होंने कहाँ से तस्वीर लेकर? उसने कहा था कि हमारे कुछ आदमी मुकद्दस मकामात में गए थे ये तो नहीं थे. उसने ये तस्वीर लिया भी हालांकि उन्होंने कहने होते पेश ना की. This lady in Tucson, I asked her about the origins of the photograph, and she said that some of my friends went to some sacred places in a part of the world, and they took photographs of these sacred places. And when the film was developed, this image emerged from the print, and yet this person was not female, nor was he photographed. इससे पहले कि हमने एक रसाले में देखा था उसमें अमेरिका में लिखा हुआ था ये आदमी आता है अस्पतालों में दम वगैरह करता लोग की पड़ जाते हैं कि इसमें वो तो ले ली वो In addition, we also saw another magazine prior to speaking to this lady. There was a similar image of this man, and the report was from the United States that this man is in a hospital. It shows incurable patient, and another photograph was taken by somebody of the person, and it matched. We have to you there, but thank you, Mr. Shahi. Thank you, the Carflity, for us, Mr. Hussain. You're listening to BBC GMR 95.1 or 104.6 FM. This is Sunday Breakfast. I'm Mike Kitty. The time now, 29 minutes. No.